अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बेटा आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो, Hello, Miss. Can you hear me? यस, नाउ आई कैन हियर यू। ओके, Yeah. ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल इक्वेशंस अगेन। ठीक है, थोड़ी सी केमिकल इक्वेशन करने के बाद वी विल स्विच टू द न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, कहाँ तक कर लिया था हमने? ओके, राइट, वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ। ये भी हो गया था। अच्छा, हमने आज जो न्यूमेरिकल करना है वो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का करना है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स, I'm going to explain another category of equations. It is again the part of chemical equation, balancing chemical equation, but sort of थोड़ी सी चीज़ें हैं जो different होंगी और कुछ terms हैं जो initiate करवानी है। तो before moving on to the ionic equations, I'm going to recall how to make an equation and how to balance them. ठीक है भाई, let's say we have an example. एक एग्जाम्पल कोई एक इक्वेशन की ले लेते हैं। ठीक है, आप साथ साथ लिखो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जिंक सल्फेट? जिंक सल्फेट, ZnSO3. सल्फेट इज SO3 और SO4? SO4. SO4, so that means zinc ZnSO4. Let's react zinc sulfate with any other reactive metal. Choose any metal. Any metal. Rubidium. Okay, rubidium. ठीक है। Okay, which one is more reactive metal, rubidium or zinc? I think it is zinc, Why? because rubidium is like it has like one like it has only one electron equivalent. No, okay. Let me clear the concept here. देखो, zinc belongs to transition element, ऐसा ही है? Yes. So all of the transition metals are less reactive than the metals present in group 1 and 2. ठीक है? Okay. जितने भी मैं आपको ट्रांजिशन मेटल की एग्जांपल दूं, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, देन वी हैव कोबाल्ट है, बहुत सारे मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स which are always going to be less reactive than metals present in group 1 and 2. group 1 का मतलब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, group 2 का मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम. So all of these metals present in group 1 and 2 are more reactive
than transition metals. ये हमेशा याद रखो. Transition metals are always going to be less reactive. And there is another point about transition metals. They have multiple oxidation states. That means they exist in more than one valency. Their valency is not fixed. If I'm talking about zinc, it can be plus 1, plus 2, plus 3. If I'm talking about copper, it can be plus 1, plus 2, plus 3. If you are talking about iron, that can be plus 1, plus 2, plus 3. So they have multiple oxidation states. The states are the valency and oxidation state. एक ही बात है, valency बोलूं या oxidation state बोलूं. These are not fixed for transition elements and they can vary, right? प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 ही हो सकती है, इससे आगे नहीं. यानी 4 से जो है वो हमारे पास नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं. तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 are the multiple valencies जो कि transition element में हो सकती हैं. Okay. What is the reaction here? कि zinc sulfate is reacting with rubidium. या अगर हम rubidium के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. What is gonna happen? What would be the product? So with sodium or like rubidium? You can make a bond with sodium. Yeah. हाँ भाई. No, wait a minute. So, is it going to be? This bond between zinc and sulfate would be broken, and zinc will be replaced by sodium, obviously. The reason is sodium is highly reactive or more reactive than zinc, and it can easily break this bond between zinc and sulfate and replace zinc with itself, right? Yeah. Because this one is more reactive, obviously. So what would be the formula of sodium sulfate? And obviously zinc will be left alone, separate. So it is Yeah. going to be Na. Yeah. Na2 Na2, SO4 Na2SO4. ठीक है. plus zinc. Plus zinc. Yes. Is it balanced? Like Let's talk about is zinc first. Okay, with the balancing, we have to consider the elements, right? So let's go in the sequence. First, we have zinc here. Zinc is one, obviously. यहाँ पे भी zinc एक ही है. It is balanced. Sulfate, sulfate एक ही मोल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. Then we talk about Na. तो यहाँ पे Na दो है और यहाँ पे एक है. तो यहाँ पे सिंपल आपने 2 लगा देना. ऐसा ही है. yes. That's the balancing. Balancing हो गई. ठीक है. अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. What is the formula for sulfuric acid? H2SO4. H2SO4. Let's react sulfuric acid. And what is the formula for aluminium hydroxide? A wait, AL OH. Well, ALOH. AlOH. That's it. Yeah. Check it again. Is it not? Check the valencies. What is the valency of aluminium? Valency of aluminium is +3. Yes. And valency of hydroxide. Hydroxide. Is -1. -1. So what would be the formula after crossover method? ALOH3. Yes. That means bracket में 3 आएगा. ठीक है. Bracket में 3 आ जाएगा यहाँ पे.
Can you make products? So I think H2 is going to react with HO, OH, yes. right? OH, and SO4 is going to react with Al. Yes. So what would be the formula? For aluminum and SO4, it is going to be Al2SO4 Al and 2 तो सही है, SO4 के साथ कुछ लगेगा? E3 यस, brackets में. ब्रैकेट में 3. दूसरी चीज बहुत इजी है, क्या बनेगी? H2O. यस, H2. लेट्स बैलेंस इट नाउ. ठीक है, बैलेंस करके देखते हैं. बैलेंस के लिए सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड पे? यहाँ पे 3 और प्लस 2 5. 5. और यहाँ कितना है? 2. तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो जिस साइड पे कम जो नंबर है या नंबर कम है, मोल्स कम है, तो मैंने नंबर वहां पे एडजस्ट करना है बेसिकली. तो 5 को तो मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं शायद टू से कुछ कर सकूं. मैंने यहाँ 2 2 4 अगर लगाती हूँ मैं, तो स्टिल ये 4 और ये 5 अभी भी यही ज्यादा है. तो लेट से मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, 3. तो ये कितना हो गया? 3 2 6. लेकिन यहाँ कितना है? ये 5 है ये. मुझे ये बताइए कि एल्यूमिनियम में फर्क है. एल्यूमिनियम कितना है? यहाँ एक सेकंड मानना, एक सेकंड. यहाँ 2 लगा दो. यस. जब मैंने एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 लगाया, तो लाजमी बात है इस पे भी फर्क पड़ेगा. इस पे आते हैं अभी हम, क्या डिफरेंस पड़ा है हम आते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एल यहाँ पे 2 है, तो मैंने एल को 2 कर दिया. SO4 यहाँ पे 3 है, तो क्या मैं 3 लगा के यहाँ पे SO4 3 कर सकती हूँ? यस. मैंने 3 लगा दिया. नाउ लेट्स काउंट हाइड्रोजन. 3 2 6 एंड 2 3 6. ऑल 12. टुगेदर इट वुड बी 12. 12. दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? 6. ये बात आ गई समझ? यस. मतलब अब आप पहले दूसरा सॉल्व कर लो, फिर उससे आपको आपको जो कुछ. सबसे इजी, बिल्कुल अपेरेंटली आपको जो दिख रहा है ना, मुझे सामने इक्वेशन देखते ही पता चल रहा है कि भाई ये 2 है, ये 1 है, तो मैं फौरन यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ. SO4 मैं कंप्लीटली एक साथ ही कैलकुलेट करूंगी. ठीक है, मैं SO4 को पूरा एक साथ लूंगी. तो ये 3 है, मैं इसको इजी 3 कर सकती हूँ. तो जो मुझे सबसे इजीली पहले लग रहा है मैं उसको करेक्ट कर दूंगी. देन वील गो टू द कॉम्प्लेक्सिटीज, कि फिर आप देखोगे कि हाइड्रोजन कितना हो रहा है. ठीक है. ओके. तो अगर सल्फेट को मैं देखूं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इट इज बैलेंस्ड. एल्यूमिनियम देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इट इज अगेन बैलेंस्ड. फिर अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें, तो 3 2 6 एंड ऑब्वियसली 3 2 3 6. तो ये 12 हो गया, 6 2 12 हो गया. ये ऑक्सीजन कितना है? 2 3 6, ऐसा ही है. ये ऑक्सीजन यस. 6 है, तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन, ये वाला 6 है. सो इट इज बैलेंस्ड नाउ. ओके. अब मैं एक इक्वेशन आपको दे रही हूँ, जरा आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मुझे आंसर बताओ. सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आप लिखोगी, रिएक्ट्स विद लेड ऑक्साइड. लेड होता है बेटा Pb, और ऑक्साइड ऑब्वियसली O. और लेड की वैलेंसी होती है +2. सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद लेड ऑक्साइड. ठीक है, लेट्स कंप्लीट द इक्वेशन and then balance it. I'm giving you like 5 to 7 minutes. The reactants are clear, right? Sodium nitrate and lead oxide. या.
Okay, so like the red Cause NO4 has a valency of -5. okay, nitrate is NO3. Okay, calculate the valency. नाइट्रेट NO3 होता है. नाइट्रोजन देखो आप कौन से ग्रुप में है और ऑक्सीजन देखो. नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5. Yes, Valency would be +3 in comparison to oxygen because पॉजिटिव. it will be 6. अच्छा पॉजिटिव 3 का क्या मतलब है? Like it is giving 3 electrons. Giving off 3 electrons. Is it happening in nitrogen? Is it giving off 3 electrons? 5 तो उसके लास्ट शेल में है ना. Yes, तो जब 5 लास्ट शेल में है तो इधर इट कैन gain 3 electrons or lose 5 electrons. Is it? yes. What would be the valency? Wait. It could be like +5 or -3, right? Yeah. So which one are you going to do? Are you going to choose? +5. Yes. What about oxygen? Because in comparison to oxygen, Yes. I'm going to More choose as electron. negative Yeah. values. Yes. The value for oxygen is the valency for oxygen is It is going minus. to gain 2 electrons Yeah. -2. And 3 So it is obviously. 3 3 में तो 6. ठीक है. Overall valency क्या बन गई भाई? it is going to be -1. Yeah. So what would be the formula of sodium nitrate? Sodium nitrate is NO4. Nitrate is NO3, right? Uh-huh. Sodium nitrate NO3. NO3. ठीक है. Yes. What about lead oxide? Lead oxide. Lead has, as you said, it has Yeah. +2, Yes. and oxygen has -2, so it is going to cancel out each other. Yes. Formula would products would be. Tell me the products. Product would be, wait, I did it as N. Wait. So NaO will be R1 area. Okay, tell me the valency of sodium here. Sodium is +1. +1. Oxygen is -2. yeah. So formula would be Na2O. very good. ठीक है भाई. What about the other product? It has other two, and then so it is PB and then NO3 with brackets 2. It would be PB and a 3 in bracket 2. Very good. Can we balance it now? देखो कैसे हो रहा है जल्दी से. Let's pick the easier one first. I think it's very easy. You only have to put one number over where exactly. The Na is like should be Yeah.
It is balanced. ठीक है. Yeah. Na भी 2 हो गए यहाँ पे, obviously यहाँ पे भी 2 हैं, NO3 is 2, NO3 is 2. So we are going to focus on these ones, right? यहाँ पे आप जो आपको easily दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मैं इसको पहले बैलेंस easily कर सकती हूँ, just do that. Then फिर हम count कर सकते हैं कि भाई which elements are left and what would be the total count, right? Okay, I am moving on to the next part of equation, which is called as ionic equation. आयने का मतलब है आयंस बन रहे हैं लाजमी, ठीक है. यानी कुछ प्रोडक्ट में आयंस बन रहे होंगे, कुछ में नहीं भी बन रहे होंगे. कब बन रहे होंगे, कब नहीं बन रहे, ये पढ़ेंगे हम. तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. लेट्स से वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide, but this time we know the states of these two, right? Let's say we have AQ. What does it mean? Aqueous. Aqueous. What do you mean by aqueous? Like it is a solution. The solvent is water, right? Yes. Or HCl is being diluted with water. But if I Yes. am writing this over here, what does it mean? Like it is a liquid, but like it is not mixed with water. Yeah. So there's a difference between aqueous and liquid, right? Yes. So NaOH, sodium hydroxide, which is a base, it is in pure state, it is in liquid state. But if you talk about HCl, hydrogen chloride or hydrochloric acid, it is mixed with water. Can you recall the definition of acid, which we have already been, which we already covered the part of definitions of acid and base? Do you remember that? Okay, let me give you a hint. Aqueous medium में ही क्या करते हैं acid? What can be the definition? Hmm. Like it changes the color That of. these are all the properties, right? I'm giving you the hint now. अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड एक्वस मीडियम में क्या रिलीज करेगा? ओके, हाइड्रोजन आयन है, ऐसा ही है. कैन यू हियर मी? Yeah, yeah, I said ओके. yes. अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ठीक है. एसिड्स की बेटी डेफिनेशन ये है कि व्हेन इन एक्वस मीडियम, दैट मींस इन वाटर. वाटर लाजमी है. वी आर नॉट रेफरिंग देम एज लिक्विड स्टेट, ठीक है. HCl को मैं अगर लिक्विड स्टेट बोल रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही डेफिनेशन में कि इट इज इन लिक्विड स्टेट एंड इट कैन रिलीज हाइड्रोजन एंड नो. मैं कह रही हूँ कि HCl और एसिड must be in aqueous medium. It must be reacted with water. It must be present in aqueous medium or water medium in order to release hydrogen ion. That is about the acids. And when it comes to bases, then again in aqueous medium. That's the only limitation here. Aqueous medium के अलावा मैं कोई बात नहीं कर सकती. Aqueous के अलावा अगर मैं liquid कह रही हूँ तो obviously the definition would be incorrect. मैं अगर बात कर रही हूँ aqueous की, then only these bases or this one NaOH can release hydroxyl ions. तो ये हम सिर्फ aqueous की यानी water medium की बात करते हैं. तो यहाँ पे mention है HCl, यहाँ पे mention है NaOH. The physical states are mentioned as well. This one is in aqueous state. This one is in liquid state. Then we have NaCl as a product, which is in solid state, and then we have water H2O, which is again in liquid state. Okay, tell me which one of them is going to be ionized out of these four. Which one is going to be ionized? Ionized मतलब obviously कौन आयंस बना सकता है? I think chlorine. Which one? Chlorine. I cannot hear you clearly. Chlorine. Chlorine
Where is it? Chlorine कहाँ है? Chlorine तो है नहीं. NaCl. NaCl. It is in solid state. क्या solid state में कोई भी कंपाउंड आयनाइज हो सकता है? आयंस बना सकता है क्या? अनलेस कि मैं उस NaCl को, उस नमक को, सॉल्ट को डिसॉल्व ना करूं वाटर में, क्या वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में आयंस बना सकता है, फ्री आयंस? No, नो. because everything is all particles are packed together. या एग्जैक्टली, ये आपने पढ़ा है पहले भी. तो NaCl को जब हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, लेट्स से क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, then we can say कि now this bond has been broken, and now NaCl is being divided into Na plus and Cl minus, when exactly when it is in aqueous medium. But right now it is not in aqueous medium. मैंने solid mention किया हुआ है. Is it going to be ionized? No, No. Right? What about this one? H2O. it is liquid, Yeah. so it can be more ionized than solid. Yes, but we are only considering the compounds having aqueous state, and only aqueous state compounds, I mean the compounds having aqueous state can be ionized. That's it. That means we can write this equation like this: H plus, because obviously ionized हो चुके हैं, तो मैं इसको सेपरेट लिख रही हूँ, Cl माइनस, और बाकी जितना भी आगे कुछ लिखा हुआ है NaOH, उसको आप एज इट इज कॉपी कर दोगे, NaCl, एंड देन वी हैव H2O. क्या ये बात आई है समझ? दैट मीन्स हम सिर्फ उस कंपाउंड को आयनाइज करेंगे जो कि एक्वस मीडियम में है, दैट्स इट. बाकी लिक्विड, सॉलिड, नहीं, अगर इवन, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक्वस हो तो उसको हाँ भी बिल्कुल नहीं। भी उसको भी करेंगे, लेकिन अभी प्रोडक्ट साइड पे कोई एक्वस नहीं था. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक्वस की. ओके, we have CaCO3, which is calcium carbonate. Let's say it is in solid state, it reacts with HCl, which is in aqueous state, and then we have CaCl2, which is calcium chloride, and it is again in solid state, and we have two gases, H2O, aqueous, carbon dioxide, gas. Now what's happening here? Can we ionize this one? Uh, the HCl we CaCO3, can. calcium carbonate. No, it is solid. We cannot because it's in solid state. हम इसको as it is copy कर देंगे यहाँ पर. What about HCl? It is going to ionize Yes, H in H plus plus Cl minus. and Cl minus. Okay. Product side, calcium chloride. Can it be ionized? No, solid. As it is copy. ठीक है. Then we have H2O. Can it be ionized? Yes, it can be. It is So it would be like H plus and O negative. OH negative, right? Hydroxyl. Yeah. Carbon dioxide. It is in gas. It Yeah, cannot be ionized. cannot be ionized. Okay. Now we have another point. क्या मैं यहाँ पे कोई आयन कैंसिल आउट कर सकती हूँ रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे? You can. या You. दिस I वन, think you can. Yes. हाइड्रोजन. वी आर गोइंग टू कैंसिल हाइड्रोजन. क्या इसके अलावा कुछ कैंसिल हो रहा है? Okay, so cancellation means these ions are not participating in the whole reaction because they have been cancelled out by each other. So the ions which are not participating in a reaction are called as spectator ions. ठीक हो गया? What are spectator ions? Ions which are not participating in the reaction and obviously which have been cancelled out. So we have hydrogen ion here, which is an spectator ion and not participating in the whole reaction. अब जो बच रहा है मेरे पास इसको कैंसिल आउट करने के बाद, वो ये इस तरह का कुछ मामला है. CaCO3 प्लस क्लोराइड यानी Cl माइनस
and then we have CaCl2 as it is. मैं कॉपी कर दूंगी इस पूरी इक्वेशन को, and that would be an ionic equation. ठीक है, so after cancellation first we have to consider the states, physical states. If there are aqueous states, obviously we are going to ionize them. आयनाइज कर दिया, देन वी कंसिडर दी स्पेक्टेटर आइंस. जितने स्पेक्टेटर आइंस हैं दैट मींस जो कैंसिल हो रहे होंगे वी आर गोइंग टू कैंसिल देम आउट. जब ये कैंसिलेशन हो जाएगी तो जो कुछ भी इक्वेशन में बचेगा दैट वुड बी योर आयनिक इक्वेशन. आर यू गेटिंग इट? Yes. Okay, let's take an example. Write down the equation. अच्छा, एक इक्वेशन जो मैं आयनिक पे आने से पहले आपको देने वाली थी वो पहले देख लेते हैं, जो कि एक नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन है. ठीक है, लेट्स से वी हैव, या हम एक काम करते हैं कि हम बैलेंस भी कर लेते हैं और हम आयनिक भी कर लेते हैं. लेट्स से वी हैव मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, अब आप इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह भी करेंगे. ठीक है, हम जैसे करते हैं बैलेंस करके, और हम इसको आयनिक भी बनाएंगे. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड हियर इज इन aqueous state. ठीक है, obviously the product would be magnesium sulfate which is in aqueous state. And then we have hydrogen gas. ठीक है, बैलेंसिंग बताइए बेटा सबसे पहले. It is equal. It is equal, yes. So let's do the ionic equation. कैसे करें? Mg is going to remain the same, and H is going to separate. HOSO4 is going to separate. So like this. Ionize. What about sulfate? What is the valency? If you don't remember it, you can easily calculate it. It's fine. It's not necessary to just remember the all of the valencies. Just calculate it. -2. -2, very good. Okay, then we have product. Product में क्या हो रहा है बेटा? Can we analyze them? Yes, we can. We can. Magnesium. What is the valency for magnesium here? 2, +2. +2. Sulfate is obviously -2. Yes. What about hydrogen gas? It is going to remain the same. It's going to remain the same. Can we consider or can we identify spectator ions here? Like what? Can we cancel any of the ions? Because obviously cancellation सिर्फ ions में देखनी है आपने. आप कभी भी Yes. जी बोलो. नहीं आप बोलो. ये जो मैग्नीशियम है ना, this one is in solid state. You cannot cut or cancel this magnesium with this ion, क्योंकि ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज हैं. ये मैंने आयनाइज किया है और ये सॉलिड स्टेट है, तो मैं इसको कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकती. हमेशा आप याद रखो, कैंसिलेशन हम हमेशा उन आयंस की करेंगे जिनको हमने एक्वस स्टेट में देखते हुए आयनाइज कर दिया. जब एक्वस स्टेट में जिनको मैंने आयनाइज किया है, मैं उन्हीं को कंसिडर करते हुए अब कैंसिलेशन करने जाऊंगी. कैन एनी आयन बी कैंसल्ड आउट हियर? Yes, SO4. So It's which one? SO4. SO4. ठीक है, so the spectator ions would be here SO4. अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना. अब आपने एज इट इज जो है वो इसको कॉपी करना है. मैग्नीशियम सॉलिड था आपके पास, प्लस आपके पास हाइड्रोजन था विच इज ऑब्वियसली इन एक्वस स्टेट. यहाँ पे आप AQ यहाँ पे मेंशन कर दोगे ऑब्वियसली. ठीक है, देन वी हैव Mg+2. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला यही था, ये जो मैग्नीशियम वाला पॉइंट था, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड स्टेट में है, इट हैजंट बीन आयनाइज्ड. लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे ये ऑब्वियसली एक्वस स्टेट में था और ये आयनाइज हुआ, तो यू कैन नॉट जस्ट कैंसिल देम कि भाई ये मैग्नीशियम है ये भी मैग्नीशियम है तो कैंसिल कर दें. नो, कैंसिलेशन हमेशा आइंस की होती है, जब भी हम स्पेक्टेटर आइंस कह रहे हैं.
That means ions which are not participating in the whole reaction and they have been cancelled out. यहाँ पे आपके पास बच गई H2 गैस, ये एक्वस था, ठीक है, और ये गैस है। ये क्लियर हुआ है बेटा? Yes. ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ इक्वेशंस आपको दे रही हूँ, ठीक है, फॉर मे बी योर होमवर्क। जरा आपको लिखिए, सबसे पहले लिखिए कैल्शियम रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। कंप्लीट द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन। और यहाँ पे मैं आपको, अच्छा मैं आपको लिख भी देती हूँ, कैल्शियम इज इन सॉलिड स्टेट, then we have HNO3, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है। It is in aqueous state. Can you complete the equation? Is it going to be CaNO3 plus H? Recheck it. CnO3. Check the balances. Then the crossover method. Okay. Calcium. What is the valency of calcium? +2. +2, and nitrate is? Complete this equation. I'm going to give you another one, like for your homework. Nitrate is -1. Yeah. So the formula would be? Going to be CaNO3 brackets 2. Very good. ठीक है. And और क्या बनेगा? H plus H. सिर्फ H? Uh, क्या with H the कभी मोनोएटॉमिक फॉर्म में हो सकता है लाइक दिस? क्या सिर्फ हाइड्रोजन लिख सकते हैं हम कभी? लिख तो नहीं सकते, और उधर कोई है ही नहीं साथ। नहीं तो ये हम इसीलिए तो बैलेंसिंग करते हैं। अब यहाँ पर ये कैल्शियम और नाइट्रेट बॉन्ड बना चुके हैं, तो